Hello everyone, my name is Rajat Singh. On behalf of Amritsar Founders, I welcome you all. Topic for today's webinar is Agile Business Transformation by Anurag Byala. Hi everybody, how are you all? Before I start my webinar, I would like to take your inputs before I start. So just in case, if you can let me know from which industry do you belong to? Okay, so we have people from education, we have people from manufacturing, we have people from textile. Okay, so before I start, I have a basic question for all of you. Why you need to transform your business? That is the most basic question that I have for you today. I'm sure you must be facing a lot of challenges like missing deadlines, lack of customer satisfaction, lack of team motivation, lack of ownership in the teams. I think this is pretty common to all of us. And there's no clarity on the project. So when I say there's no clarity, that means sometimes we don't understand the timelines of the project. We don't actually see the visible changes in the project. So I think most of the challenges that we are facing are pretty common. So I believe that problem to all these challenges, all these solution to all these problem is agile. uh, I am speaking from my personal experience. I'll tell you my background before I start. So we started in 2012, and we started with a very small team size, but gradually we have grown to a larger team size of around 40 people. And now we have understood the importance of agile methodology, because now I feel that there are a lot of improvements that we have to do as a company, as a service provider. And at the same time, I think there's a lot of scope of improvement as far as the processes are concerned. So recently we started focusing on agile methodology. And I would still be very honest with you, we have just started, and we are still exploring the tips and techniques of agile project management. So here it is. What is agile methodology? That is the most basic question that you guys might have today. So let me give you a plain simple definition of agile. It is not a process. Agile methodology is not a process. It is basically a set of principle and values that we follow. So when we say agile, in the agile manifesto, we have core values. Those are four in number. हमारी टोटल चार कोर वैल्यूज हैं एजाइल मैनिफेस्टो की. सो अगर आप ये चार वैल्यूज को समझ जाते हैं, अगर आपको इन चार वैल्यूज की क्लैरिटी मिल जाती है बाय एंड ऑफ दिस वेबिनार, आई थिंक माय जॉब इज डन फॉर टुडे. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वैल्यू. The first value says individual and interactions over processes and tools. इसका क्या मतलब है? Your organization, your company should be people oriented rather than processes and tools oriented. इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा. यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा टेक सेवी बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे टूल्स, कम्युनिकेशन टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि स्लैक यूज करते हैं, हम ईमेल्स यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं. तो जो टीम की कम्युनिकेशन है वो प्रोसेसेस और टूल्स के ऊपर हो रही है रादर देन द फिजिकल इंटरेक्शन. सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एजाइल इज दैट इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड. लोग टीम में आपस में बात करें. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आके दूसरे पर्सन को हेल्प आउट करे. लोग साइलोज में ना रहें. द पॉइंट इज कि लोग अपने जोन में ना रहें, लोग आके दूसरों की हेल्प करें और नॉलेज शेयरिंग हो विद इन द टीम. सो दैट इज द फर्स्ट वैल्यू. सो क्विकली गिव मी अ yes if you understood the first value of agile manifesto. Give me a quick yes. Great. So I'll jump on to the next core value. The next core value is working software or a product over comprehensive documentation. इसको समझने के लिए मेरे पास लाइव एग्जांपल है मेरे खुद के बिजनेस की. So I'll tell you what does the second core value means.
इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर के पास क्विकली लेके जाना है जो कि एक वर्किंग मॉडल हो। जैसे कि हम यूजुअली कस्टमर्स के लिए वेबसाइट बनाते हैं, सो व्हेन वी डेवलप वेबसाइट वी मेक श्योर दैट वी टेक रेगुलर feedback from the customer, and we make sure that we launch a product which is called MVP, minimal viable product. Minimum viable product is something which is working, at the same time it is marketable also. एक एनालॉगी है मेरे पास which is a pizza manufacturing or maybe a pizza making process. So pizza making process में पिज्जा का बेस रहता है, राइट, उसके ऊपर सॉसेजेस रहती हैं, उसके ऊपर हम चीज भी यूज करते हैं, फिर उसके ऊपर टॉपिंग्स रहती हैं, फिर उसके ऊपर हम सीजनिंग करते हैं ऑरिगेनो से, चिली फ्लेक्स से। तो यूजुअली जब हम पिज्जा बनाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है, एंड प्रोडक्ट के ऊपर। एंड प्रोडक्ट हमारे केस में क्या है, पिज्जा। लेट से मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले हम पिज्जा का बेस बनाएंगे। पिज्जा का बेस बनाने के बाद हम उस पिज्जा बेस को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। मार्केट में लॉन्च करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कस्टमर से फीडबैक लेंगे उस प्रोडक्ट की। पिज्जा बेस इटसेल्फ इज अ मार्केटेबल प्रोडक्ट, राइट। सो अगर हम पिज्जा बेस को मार्केट करते हैं और कस्टमर से पूछते हैं ओके आपको इसमें गार्लिक का कंटेंट कैसा लगा, आपको इसमें जिंजर का कंटेंट कैसा लगा, या जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हम उस फीडबैक के ऊपर काम करके उसको मॉडिफाई करके पिज्जा बेस और बेटर कर सकें तो हमारा जो आगे प्रोडक्ट बनेगा वो और बेटर बन सकता है। So I hope I am able to help you understand what is MVP. MVP is basically a minimal viable product. So core values ये बोलती हैं कि you should work on a working product rather than a comprehensive document. Comprehensive document का मतलब क्या है कि हम जब agile methodology नहीं यूज करते थे हमारी कंपनी में, comprehensive document किया जाता था जिसको 15-15 दिन, एक एक महीना लगता था। तो हम पहले पूरी की पूरी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स को कंपाइल करते थे और उसको कंपाइल करने के बाद हम वेबसाइट के ऊपर काम शुरू करते थे। अभी हम क्या करते हैं, discussion with the customers, we give the wireframe to them, we give the modular parts of the website to the customer gives the feedback on that small module which is a workable module, and then we move on to the next step. Give me a yes if you understand the second value of Agile Manifesto. Guys, quickly give me a yes. Okay, great. Third value, very important, customer collaboration over contract negotiation. कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करके आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है या आपके सर्विस के ऊपर काम करना है, rather than negotiating on a contract. So it says employ a customer first approach. Customer is your first priority. I have a small analogy again. I'll be giving too many examples today, so believe me, ये examples के बाद you'll get a lot of clarity on the Agile Manifesto. So आप सबको idea होगा, when we go to buy a flat, यूजुअली हम फ्लैट देखने के बाद हम सबसे पहली चीज क्या पूछते हैं कि उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके इंटीरियर्स कैसे होंगे, क्योंकि अभी फ्लैट जो है वो बन रहा है, अभी वो बनने की स्टेज में है, तो हमें क्लैरिटी नहीं रहती। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो लोग एक सैंपल फ्लैट रेडी करके रखते हैं। आप रिलेट करेंगे कि सैंपल फ्लैट का जो पर्पस है वो बेसिकली दे आर आल्सो फॉलोइंग एजाइल मेथोडोलॉजी। उसका पर्पस क्या है कि एक मिनिमम वर्किंग प्रोटोटाइप रेडी करना, एक एमवीपी रेडी करना, ताकि कस्टमर एक फील ले सके कि मेरा जो फ्लैट है वो दिखेगा कैसा। एक सैंपल फ्लैट में आपको उसके एम्बियंस का, उसके इंटीरियर्स का, इनफैक्ट द कंप्लीट लेआउट ऑफ दैट सैंपल फ्लैट, you'll be able to understand how my flat is going to look like. This is one example. Secondly, UAE में एक होटल कंस्ट्रक्शन को एजाइल के तरीके से बनाया गया। उसमें कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसने होटल ओनर को पूरा होटल बनाने से पहले एक सैंपल रूम बना के दिया, और होटल ओनर ने जब वो सैंपल रूम देखा तो उसको समझ में आया कि ओके ये इसके एस्थेटिक्स थोड़े से चेंज करने हैं, यहाँ पे ये सीनरी चेंज कर दो, यहाँ पे ये लेआउट चेंज कर दो। एंड वंस द फीडबैक वाज देयर, दे अगेन वर्कड ऑन दैट फीडबैक, एंड देन something that came up was absolutely as per the
product owner requirement. So customer collaboration over contract negotiation. Give me a big yes again if you understood the third value. Big yes, Karan. Thank you so much. Fourth value. Fourth value is again super important. Responding to change over following a plan. बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ये फोर्थ वैल्यू से एग्री करेंगे. Responding to change over following a plan, ease the team into a sprint based approach. So basically analogy मैं इसको इस तरह से देना चाहूंगा कि कोविड-19 के बाद बहुत सारे स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो कि ऑफलाइन क्लासरूम्स रन करते थे, उनको सडनली अपने बिजनेस में चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ा और वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने. बट आज से पहले शायद उन्होंने इस लेवल पे, इस स्केल पे I'm sure that they have never explored the power of online training. But since there was no option, so people adapted to the change rather than following a plan. प्लान में हो सकता है उनका प्लान ये होता है कि हम स्कूल को स्केल अप करते, हम और क्लासरूम्स इंट्रोड्यूस करते, या प्लान में ये हो सकता था कि हम अपने स्टाफ को स्केल अप करते. बट रादर देन डूइंग दैट, they followed and they responded to the change quickly. And during COVID-19, I think 99.99% of the schools, they went online. Do you agree with me? Yes or no? So we have people from education background here, right? So I think they'll relate to what I'm saying. So that is the fourth core value of Agile Manifesto, responding to change over following a plan. So as an agile organization, you should be always ready to change. You should be eagerly responding to all the changes in the plan. Yeah, change or die. Absolutely, Gaurav, very true. Okay, so my today's session is more about non-IT businesses, because I understand my IT friends, they understand Agile in a much better way, and they are already implementing in their own way. But today I'll talk about people who are from manufacturing. Today I'll talk about those people who are from education, maybe textile or any other business. So here is a big myth. The myth is Agile is only for IT business. My dear friends, this is not true. This is not true. Agile is for any business. I'll tell you why and how. I'll give you some case studies, very interesting case studies, and I'm sure you will relate to all the case studies. So there was a winery project in Belgium. They wanted to introduce their wine to the people of Europe. So before they could launch the wine, they started to do agile project management. So what they did, they made small test samples of the wine. छोटे छोटे उन्होंने wine के samples बनाए. They went to a smaller set of audience who were basically wine lovers. They reviewed the wine, they tasted the wine, and they given the feedback. After feedback, they again came back to the plant. They worked on the feedback. They improved the wine quality and the taste. Again, went to the customer till the time the wine was absolutely 100%, as per the expectations of the European customer. So the answer is Agile. There was a famous book writer. He used agile technique, agile approach to write several books. I'll tell you how. Instead of writing complete book in one go, what he did, he made he had actually broken the writing into smaller pieces. So what he used to do is he used to actually get the smaller part of the book, which might be one chapter or couple of chapters, take it online, get it vetted and get it checked from the experts जो basically books को review करते हैं, उनसे review करवाया book को, उनकी feedback पे काम किया और फिर से दोबारा book को improvement की तरफ डाला और पूरी book को agile format में बनाया. Now look at the beauty. Instead of launching a book in one go, you already understand what your reader want to read and your customer want to hear. So it is absolutely great example of agile methodology again. Construction company in Netherlands, they renovated a national art museum after agile approach.
And I am sure you must have heard of Zara. Zara is a clothing company. They're a retail store for clothing. If you understand Zara and if you have done shopping in any of their stores, आपको ये जान के हैरानी होगी कि Zara के जो क्लोथिंग लाइंस है, उनके जो स्टॉक्स हैं, वो एवरी 2 वीक्स चेंज होते हैं. एवरी 2 और 3 वीक्स Zara के स्टॉक्स चेंज होते हैं. Zara इज फॉलोइंग अजाइल अप्रोच. किस तरह से? वो अपने मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से, वो फैशन ट्रेंड्स के हिसाब से अपनी क्लोथिंग लाइन को इतनी क्विकली चेंज करते हैं, इतनी क्विकली अडेप्ट करते हैं कस्टमर की लाइकिंग के हिसाब से, कि यू विल फाइंड very limited stock of a particular, let's say, coat. If I want to buy a coat, maybe I'll not find that coat in all stores of Zara. I have to search maybe on their particular stores and then I'll buy the coat. So that means कि customer का जो returning है, customer is returning because of the fact that every time he hops into the store, he gets a new latest collection. That is number one. Secondly, the profit margins are high because they are maintaining limited stocks, and obviously the demand is always high. So Zara is again a perfect example of agile methodology. Last but not the least, do it right the first time. ये बहुत ही पुरानी टर्मिनोलॉजी है, do it right the first time. So टोयोटा प्लांट में there is a production line जहाँ पे टोयोटा की गाड़ियाँ बनती हैं. तो जब भी टोयोटा की चेन में, जो जिसको हम कन्वेयर बोलते हैं, उस चेन में कहीं पे भी अगर कोई फॉल्ट आता है, तो उसी टाइम वो वर्कर पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को रोक देता है और सारे टीम इकट्ठा मिलके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो दैट मीन्स एवरी वर्कर हैज द एबिलिटी टू स्टॉप द लाइन. This again shows that how efficient Toyota production system is. Again, a classic example of agile. So I hope I have given you enough case studies, all non-IT, but very very relevant to what I'm saying. Give me a quick yes if you agree with me. Give me a agree or a disagree. Coming to the next part of the presentation, why agile? This is very important. Why you should introduce agile in your organization? I could feel the difference. What I feel is we have just implemented just the basic part of agile, but I could really feel the difference. I could really sense the kind of visibility that I have in my business. I'll tell you a comparison between a traditional businesses that you have been doing versus the agile businesses that people and other industry leaders are following. So this is a very good comparison, and after this comparison, I think your question will be answered why we want to use agile. So in a particular traditional business, on the left, we have responsibility of success, failure, and blame game. In a traditional business, the responsibility of success, failure is always on the management. अगर product fail होता है तो भी management का कसूर है, और अगर project success होता है तो भी management का कसूर है. Which is not right in case of agile, because team collaboration is the first value of agile. आप team के साथ collaborate करते हैं और team या individual की responsibility है उस product की success और failure का. There is no blame game. Why there is no blame game? Because everybody knows that this is the team who's working on the product and they are responsible for the success. Visibility, my most important and I feel the most important aspect of agile that is adopted, why I adopted agile is because of the visibility. When I say visibility, basically, there's a, let's assume there is a project. In my case, let it be a mobile app. My team is developing a mobile app. Earlier, what I used to do, earlier I used to be a traditional business. मैं team members से report मांगता था. मैं team members को बोलता था कि मेरे को information pass on करो, mobile app के कितने modules बन चुके हैं, कितने modules अभी pending है. अभी मैं किसी भी टीम मेंबर से रिपोर्ट नहीं ले रहा हूं, बिकॉज मेरे को सब कुछ बोर्ड्स के ऊपर क्लियरली विजिबल है किस मॉड्यूल का क्या स्टेटस है, विच वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, विच वर्क इज कंप्लीटेड एंड विच वर्क इज स्टिल टू बी स्टार्टेड. तो इससे ये भी पता लग जाता है कि मेरा प्रोडक्ट बगी है या नहीं, मेरे प्रोडक्ट में एरर्स हैं या नहीं. तो सो देयर इज अ कंप्लीट विजिबिलिटी. सो
This visibility is applicable across all industries, manufacturing, academics, or textile, or logistics, any company. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. अगेन कोई भी डिसीजन जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस पे बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज ऑन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट डिसाइड करेगी तो होगा, मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करेगी तो नहीं होगा. इन एजाइल इट इज empowered by the team. So entire decision making is done by the team rather than the management. Next is customer feedback. This is very important. कस्टमर फीडबैक में द होल प्रोडक्ट इज कंप्लीट, राइट, और उसके बाद जाके फीडबैक ली जाती है. यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, हम पूरा कोर्स पहले पढ़ा देते हैं और हम उसके बाद फीडबैक लेते हैं कि बताइए कोर्स कैसा लगा, या हम पूरे का पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देते हैं और उसके बाद हम कस्टमर से जाके पूछते हैं कि आप बताइए हाउ इज द प्रोडक्ट. एंड when customer says it is not up to the mark, then you have to repeat the whole cycle. Maybe you reinvent the whole wheel. But in case of agile, the entire project is done on iterations. So when I say iterations, that means बड़े प्रोडक्ट को छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, उसको कंप्लीटली आइटरेट करते हैं, एक मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद कस्टमर की फीडबैक लेते हैं. सो दैट मीन्स कि हम पूरे का पूरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लॉन्च कर रहे हैं, हम कस्टमर से स्मॉलर मॉड्यूल्स के ऊपर फीडबैक ले रहे हैं. सो द फीडबैक लूप इज शॉर्ट. अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में यूजुअली फीडबैक लूप इज प्रीटी लॉन्ग, यूजुअली आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोडक्ट कंप्लीशन. नॉलेज, very important. Imagine in traditional businesses you depend on experts. अगर आप किसी particular machine operator की बात करें तो अगर वो machine operator he's on leave, then the entire production line or the work is right. तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ऊपर है. एक्सपर्ट एक मशीन ऑपरेटर भी हो सकता है, एक्सपर्ट एक ट्रेनर भी हो सकता है, एक्सपर्ट एक प्रोग्रामर भी हो सकता है. Whereas in agile it is always cross functional teams. When I say cross functional, that means because every team member is collaborating in a way, so there is lot of knowledge sharing that is happening within the team. And because of the knowledge sharing happening, there is no expert, nobody is sitting in their own silos. कोई भी अपने comfort zone में नहीं है, सब लोगों को आके अपना knowledge share भी करना है. At the same time throughout the team सब लोगों को पता है कौन किस पे काम कर रहा है. So there is no dependency on the experts. It is always cross-functional team. I mean, teams can have multiple roles to play. Last but not the least, in traditional business, we have a resistance to change. हम ज़्यादा change के ऊपर हमारी resistance रहती है. In agile, everybody is open to change because that is how agile is. Agile rituals. I'll quickly explain this graph to help you understand some technicalities of agile. Although we have a very short time, I'll quickly tell you what the product backlog is. So product backlog is basically the end requirement, the requirement of the product. It can be a product or a service or anything. So product backlog को हम स्मॉलर स्प्रिंट्स या आइट्रेशंस में डिवाइड करते हैं. स्प्रिंट इज नथिंग बट आइट्रेशन, और उस आइट्रेशन के ऊपर यूजुअली 2 वीक्स के ऊपर काम किया जाता है. उस आइट्रेशन को डिलीवर किया जाता है और उसको रेट्रोस्पेक्ट किया जाता है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. रेट्रोस्पेक्टिंग इज समथिंग wherein we say that what went wrong, what went right, what we can do to improve this further. So retrospective is something which is again part of the continuous improvement. And apart from that, daily stand-ups are being done. So रोज सुबह 15 मिनट के लिए टीम मिलती है और टीम ये पूछती है कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई बॉटलनेक तो नहीं है. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी कोई प्रोडक्शन लाइन में कोई ऐसा बॉटलनेक तो नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिले हो रहा है. या आप अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या अगर आप कोई कोर्स बना रहे हैं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. आप आज क्या करने वाले हैं, आपने कल क्या किया, ये डेली स्टैंड अप का पार्ट रहता है. So this is basically a ritual which is being followed if you are following agile. I hope you understood the ritual part. Can we have a quick yes? I hope I have cleared a lot of things as of now. Going to the next part, which is very important, and I'll take you quickly take you through the tools that we are using, and I have a demonstration. So let's say you want to
introduce agile, right, in your organization. How to proceed? That is the next question. How to proceed? So agile has basically nothing to do with the tools, to be honest. A simple Kanban tool can help you in agile. आप Kanban tool समझते हैं? जैसे इस presentation में we have sticky notes. Let's say this is a board, this is a sticky note. So to do is something which you have to do. Doing is something which you are already doing, and done is something that you have already done. This is purely simple way to implement agile. Apart from that, we have lot of tools, those who are majorly SaaS platforms. We have Trello, we have Jira, we have Asana, Basecamp, Freecamp, and Agile. There are a lot of tools. But let me tell you very honestly, you can use any of the tool, because more or less everybody is offering you the same stuff. It's just that the user friendliness and the UI and some functionality might be different, but more or less every tool is pretty similar. So what we are using is we are using Asana as an agile tool. I'll quickly help you understand how we are implementing agile in our projects. Can you see my screen now? Yes. So on the left we have the projects that we have. So for example, UI design, backend design. So this is something which we are building a web app for one of our customers. So if you can see this UI UX to do, in progress, review, and Q&A, which is nothing but quality assurance and completed. So what we are doing is जो मेरे वेब डेवलपर्स हैं या जो वेब डिजाइनर्स हैं, उनका जो भी टास्क है जो उनको करना है, दैट गोज अंडर दी टू डू सेक्शन, विच इज दिस पार्ट ऑफ द कॉलम. जो लोग वो काम कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर दी इन प्रोग्रेस सेक्शन. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्विकली इनको बोर्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनकी कभी भी मैं इनका स्टेटस चेंज कर सकता हूँ. So once my web designer is done with the task, they will quickly move this card to review section. Okay, and then once the tester or the project manager has reviewed, it will go to the completed section. So once it is completed, me as a product owner, or maybe customer as a product owner, can anytime jump into this board and they can see what is happening in the project. They don't have to actually call anyone, they don't have to mail anyone, they don't have to message anyone to understand where the project is right now. And on top of that, you can actually upload any sort of files. You can upload your requirement based on the the type of requirement that we have. Like for example, you can upload images, you can upload text, you can chat here. So there are a lot of options. So I just wanted to give you a feel of how the agile tools look like. And I'm pretty sure that these are very basic to use. Once you install them, or maybe subscribe to them, you'll be able to understand how easy it is. And look at the visibility. I mean, I can clearly see the progress of my project, whether it is UI design or a backend API development or project start. I can see everything right here. So again, coming back to the agile tools, yes, you can actually download any of these tools, start exploring it, and I would be more than happy to help you out. But to understand the basics, this is the basics which is there on your screen: to do, doing, and done. That is something which is the status of the task, right? So are you guys ready to start your first agile project? I would be more than happy to help you. We are here to support you. I think this is going to be a great transformation in your business if you are able to implement agile in your organizations. Thank you so much for your time. Thank you, Amritsar Founders. Thank you, Marco Rubio. He is the Agile Guru, and I have been working closely with him. And thanks to Mr. Gaurav Gupta. His support has been very phenomenal in making this presentation. Thank you so much. So with this note, I would like to thank you, Anurag. I would like to thank all our participants who are here, who joined us for the webinar. So with this note, I would like to end the webinar. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you.